8, 5, 26. Exponent, that is power play. Okay, page number 45. A question is starting from 7. We have already done the figure it out second, first and second to question number 6. So question number 7, circle the numbers that are the same. So we have the numbers, the number A, circle the numbers that are same. So we have the first number, if we say number A is 2 to the power 4 and 3 to the power 6, and we have the number B is 6 to the power 4 and the 3 square. So we can write, first of all, write all the numbers. C is 6. If you have any doubt, you can interrupt the class, say pardon now in a respectful manner, and say your doubt. Okay, ask your doubt. Is it okay? Okay, yes, ma'am. Then D1 is 18 square and 6 square. And the last one E is 6 to the power 24. अगर मैं मीट पर ना सुनूं, तुमने 3-4 बोला और मैंने मीट पे नहीं सुना, यू हैव पिंज मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, हो सकता है कि आपकी आवाज ना आए मीटिंग पर. आप मुझे साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप पे पिंच करेंगी कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा. अगर आपकी आवाज समझ में मुझे ना आए तो. So this is or in a lowest form powers, lowest form powers. Huh? Take it. Lowest form powers. So we have not going to change this. We have not changed this one. We have to change like 6 and 3 because 6 is not in our lowest power. So we can write 6 as 2 multiplied 3 raised to the power 4, 3 square because it is in lowest power. As you can see here, 2 raised to the power 4. So we write this again 2 to the power 4. Then we have to pick multiplication, and if the base are same, the powers get add. So it becomes 3, 4 plus 2. So finally it gives 2 to the power 4 multiplied 3 to the power 6. You no need to write the same base than powers add. If we go move to the sixth again, 6 to the power, we can write 2 to the power 10, and it's separate 2 to the power 10 and 3 to the power 10. And simultaneously 18 can be write as 6 3 is 18. So 2 multiply 3 multiply 3. We simply did prime factor of 18. Just simply did the prime factor of 18. Nothing else. And square again 6 has 2 threes are 6 and square. So the powers of 2 is here 2 and 2 is from 2. 2 square, 2 square, 2 plus 2 is 4. So again we have power 2, 4 and 3, 3, 3 base are same. We have power here 3 square, 3 square. That means it has 3 to the power 4. Here it comes 3 to the power 4. Here it comes 3 square. So 4 plus 2 again it is 6. And the last 6 we can write to the power 4 and 2 to the power 24 and 2.
As we can see, as we can see above calculations, we we in France we say that what are the same that A and of course B is equal to D. This is your final answer. Well done. Now move to question number 8 without any doubt raising. And identify the greater number in each of the following number. So find the greater number. So if we goes to first question, 4 cubed or 3 to the power 4. So you just 4 multiply 4 and you get what? And 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and you get your answer. Then you can say which is greater. You can find it. Do by yourself. It is do by yourself. It's just a simple calculation. Similarly, you can do 2 to the power 8 and 8 square and 100 square and 2 to the power 100. The- We do the third one, 100 square or 2 to the power 100. As we can see, 100 square is it 100 square means 100 multiply 100. So 1 ones are 1. And how many zeros? These are 4. So put these 4 zeros. And with the sense of doing so many exercises in maths, we can say 2 to the power 100 is extremely large. We cannot going to calculate it as we know that 2 to the power 10 is 1024 and 2 to the power 100 is extremely large. So which is greater? Of course, 2 to the power 100 is greater. Once you do lots of problem, then you have sense which number is greater. Okay, now move to the question number 9. Any doubt? If any doubt, you can raise it. Digits 8.5 बिलियन पैकेट्स की बात हो रही है ठीक है A dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. So in a year produce how much? 8.5 billion. Okay. They want a unique ID identify code for each packet. Okay. If they choose to use the digits 0 to 9,
how many digits should the code consist of? Okay, so use of digits. Of course, we have digits 0 to 9 in universal. Use the digits. Yeah, we have digits 0 to 9. Billion. What is billion? It is ones, tens, hundred, then thousand, hundred thousands, then million. It comes to million. Million, 10 million, hundred million, and then billion, 10 billion, and 100 billion. So this is called international system of numeration. International system of international system of numeration. So how many zeros in billion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many zeros in billions? So 8.5 billion we can write is as 8.5 multiply 10 to the power 9. 10 to the power 9 means, so digits, how many digits use 0 to 9 कितनी बार use होगा? So digits needed for 8.5 billion packets are, how many are these? 8.5 है, इसको अगर हम पॉइंट हटा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पॉइंट हटा के लिखेंगे एक जीरो इंक्रीज कर देंगे पीछे 9 के आगे, तो 500, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद हुआ, तो दीज आर 10, तो दिस नंबर हैज 10 डिजिट्स। So your answer is 10 digit. Question number 9 is completed. Now move to question number 10. Okay. 64 is a square number. 8 is square, 8 is a 64, and a cube number. Okay, 4 cube. Okay, we can write 64 as 64 is equal to 8 square, and also it is equal to 4 cube. 4 4 is the 16, 16 4 is the 64. Okay, then what? Read the question. That means numbers that are both square and cube. उसके लिए कोई फॉर्मूला बनाना है. The number both square and cube. ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो स्क्वायर भी हो क्यूब भी हो. अच्छा, उसका जनरल फॉर्म बनाना है, तो इसका जनरल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट इज एज इट 64 को हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं? हाउ मेनी टूज इन 8 स्क्वायर? 8 square, or you can say how many is 2's in 4 cube? As we know, 2 is the 4 is the square of 2. There is one 2 in 1 4. We can write 4 as 2 square. 2 square. So how many 2's in 4 cube? It is 2 to the power 6 because it is double. It is in the case of 4 and 2, we have to do double or half.
In the case of 8 and 2, we know that 8 has 2 to the power 3, isn't it? Yes, okay. So 8 have 2 cube. So if we change it 8 and 2, interchange between 8 and 2 powers, then we have to go with set 3 of 2. So 64 is equal to 2 to the power 6 without prime factorization, because 4 cube is equal to what? 2 to the power 6. So what is the general form for this formula? Yes, you have many numbers. For what general form, it will be n to the power 6. N to the power 6. Accordingly, n we have to change 2 into the 4, 4 into the 8. Okay. Now question number 11. A digital locker has an alphanumeric. It can have both digits, the letters. Okay. Digital lockers have digital lockers. Locker have a digital locker have both alphanumeric. Have alphanumeric. Both का मतलब हो गया अल्फाबेट भी है and numeric भी है. Both is alphanumeric. Okay. It can have both digits and alphabet. पास कोड से अल्फाबेट से अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है. अल्फा मीन्स अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक मतलब नंबर्स 0 to 9 जो भी है. Passcode of length 5. Passcode length passcode length is 5. 5 units, either of a mix of alphabet and numerical. Some example codes are G89P0, 38098, 38098. It doesn't have any alphabet. BRJKW 003A4. How many such orders codes are possible? Like these codes. इस तरह के कितने कोड्स बनेंगे? कुछ भी बन पाएंगे. Example of codes. Yes, tell me. Any problem? अच्छा. तो हाउ मेनी कोड्स से कितने तरह के कोड्स बन सकते हैं? जैसे कि AG309, इस तरह से कोई भी बहुत सारे बन सकते हैं. ठीक है. सो हम ये देखेंगे कि पासवर्ड की लेंथ कितनी है? 5 है. पासवर्ड की लेंथ 5 है. हमारे पास चॉइसेस क्या है ये देख लेते हैं. व्हाट आर चॉइसेस वी हैव? चॉइसेस में हमारे पास 26 लेटर्स हैं एंड कितनी डिजिट्स हैं? हाउ मेनी डिजिट्स? इन्फिनिट डिजिट्स हैं. डिजिट्स सिर्फ 10 होती हैं, 0 to 9. उससे इन्फिनिट नंबर्स बनते हैं. तो 0, 1, 2, 3, 4 is 9 and 0 include, it is 10 digits. So we have 26. So total symbols क्या हो गए? We have 5 letters passcode. तो total symbols क्या हो जाएंगे अगर इनको हम sum up करेंगे? तो it is 26 plus 10, it is 36. टोटल सिंबल हमारे पास इतने हैं. और चूंकि पासकोड की लेंथ कितनी, तो टोटल पासवर्ड्स कितने हो जाएंगे? Already have done a problem in previous lecture. It is 36 to the power 5. So you have to calculate it. How much? 36 to the power 5. You have to calculate it. How come? You have to multiply 36 times. Okay. It is some you have to do by yourself calculation. You have get a figure of like about 6 lakh 60 lakhs में.
60 lakh समथिंग आएगा approximately. So this is your answer. Any doubt? No doubt. Okay, move on. Question number 12. Which question? The worldwide population of sheep in 2024 is about 10 to the power 9, and that of goats is also about the same in 2024. What is the total population of sheep and goats? अप्रोक्सीमेटली बताया 10 टू द पावर 9 थे और जैसे ही शीप थे वैसे ही क्या थी goats भी थी तो these are you have some options. How many options is there in the question? You have options, 6 options. So population of sheep and goats. Population of sheep and goats in 2024 is about 10 to the power 9, and for it is same for both. It is same for both. So it will be what is total for sheep, and total will be 10 to the power 9 plus 10 to the power 9. Okay, 10 to the power. Hmm. So 10 to the power 9 and 10 to the power 9 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये प्लस करके लिखा है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 10 प्लस 10 कितना होता है? 20 होता है, तो 20 को और कैसे लिख सकते हैं? 2 multiply 10. So we can write it 2 multiply 10 to the power 9. So which correct options are? Tell me the 5 and option 6. Scientific notations, you have already done it in class 7, so recall it in 2 minutes. I will come back.
So now come back to question number 13. Calculate and write the answer in scientific notation. Scientific notation, question number 13 में आपको करना है. If each person in the world had 30 pieces of clothing, find the total number of pieces. So what is the population? So we have first question, 8 billion. 8 billion. So presently world population, population, ये वाला P नहीं होगा. Population is approx to, it is not just equal to because it is raising. Accommodation होता चला जा रहा है, इसलिए approximately it is not just equal, it is slightly equal. और each has 30 clothes. Each population, each one has 30 clothes. So what it will be? 3 multiplied 10 to the power 10. Okay. No, 30. It is 30 multiplied 10 to the power 10. और चूंकि scientific notation, it is not scientific notation. Scientific notation आपका इस तरह का होता है 3.0. तो 3 में 30 में जो 3 10 to the power 11. This is your first answer. The second question, जो कॉलोनीज है हनी बीज की वो है world population is about 10 to the power 10. Each has 30 clothes. So 30 में से जो 0 था वो हमने 10 को दे दिया, तो 10 के पास 10 की पावर थी, तो एक 0 बढ़ने की वजह से वो पावर 11 हो गई और 30 बन गया 3. 3 10 जा 30. तो scientific notation 3.0 into 10 to the power 11. The second one, so there are about 100 million bee colonies. Bee colonies is 100 million. How many is? Find the number of honeybees if each colony has about 50,000 bees. 50,000 bees हैं. तो what is 100 million? Million में होते हैं 80. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 to power क्या 100 million का मतलब 100 billion में होते हैं 1 tens 100, 1000, 10,000, 100,000, million 10 million 100 billion में okay 8 10 to power 8. बीस पर कॉलोनी क्या हो रही है? इट इज 50,000 बीस पर कॉलोनी हो रही है 50,000 का मतलब 5 रे multiply 10 to the power 1 2 3 4. So what is the total population? हमें ये निकालना है, तो total population 10 to the power 8 को multiply कर देंगे 5 multiply 10 to the power 4 से. 5 को हम लिख सकते हैं 5.0 और बेस सेम होता है तो पावर सेम हो जाती हैं, सो इट विल बी 12. इसी तरह से बैक्टीरिया है 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है. ट्रिलियन हैज 10 to power 12. After billion it comes trillion, then quadrillion, quintillion, pentillion, septillions, octillions, nontillions and dectillions. ओके और 3 3 में होता है, 3 3 में होता है, जैसे कि
ट्रिलियन में, बिलियन में कितना जीरो है? बिलियन में 10 की पावर कितना होता है? 9 होता है। और फिर ट्रिलियन में 10 की पावर 12 होता है। तो क्वाड ट्रिलियन में 10 की पावर 15 हो जाएगा। और क्विंट्रिलियन में 15 18 हो जाएगा। और फिर सेक्सट्रिलियन में आपका 10 की पावर 18 19 20 21 हो जाएगा। फिर सेंट्रिलियन में आपका इट इज 124 हो जाएगा। और ऑक्ट्रिलियन में आपका इसी तरह से तीन तीन होता जाएगा। ऑक्ट्रिलियन होता है, फिर नन ट्रिलियन होता है, और फिर लास्ट में डेक्ट्रिलियन। डेक का मतलब 10। तो व्हाट इज द पावर ऑफ डेक्ट्रिलियन? डेक्ट्रिलियन में कितनी होगी? 24, 10 की पावर 25 26 27 हो गई। नन ट्रिलियन में 28 29 30 हो गई। और 33 हो 33 हो गई। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि बैक्टीरिया है थर्ड वाला। बैक्टीरिया में जो भी बैक्टीरिया है वो 38 ट्रिलियन है, द थर्ड वन। तो 38 ट्रिलियन क्या हो जाएगा? मैं टोटल लिख रही हूँ। टोटल क्या होगा? टोटल आपका इस तरह से होगा, 38 ट्रिलियन में आपका 38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। और ह्यूमंस जो हैं वो अबाउट अभी पॉपुलेशन, अभी ह्यूमंस की पॉपुलेशन हमने डिस्कस करी 10 की पावर 10। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पे आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.8 × 10 की पावर 23। क्योंकि 10 + 2 = 22। और चूंकि 38 साइंटिफिक नोटेशन नहीं होता, साइंटिफिक नोटेशन होता है 3.8। तो 3.8 जब करेंगे तो ये आपका पहले 22 आएगा, फिर जब डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 23 एक बढ़ जाता। ठीक, कितना होता है बेटा? हाँ, तो मैंने 38 में 22 आएगा, ये 3.8 में लिखा है मैंने। और यही मैं तुम्हें बता रही हूँ। सही से क्लास में ध्यान से सुना करो जो बोला करे। 3.8 में 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तब वो 38 3.8 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करने वाला 10 है वो 23 में आ जाएगा। दैट्स इट। टाइम स्पेंट ईटिंग, एवरेज लाइफ, अगर 1 घंटा हम डेली ईटिंग में लगाते हैं, अगर हम एवरेज लाइफ टाइम में हम कितना खा लेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो एज्यूम एवरेज, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, ये वाला आप खुद से ही कर सकती हैं। ठीक है, आप ट्राई करिएगा फोर्थ वाला, अगर आप कर पाएंगी तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एनी डाउट्स? ओके, यू कैन नाउ लीव द क्लास।